पेरेंट्स का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल सेलेक्ट करना। मैंने अपने वीडियोस के थ्रू आपको कई ऐसे स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन दी है। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसे ही बेहतरीन स्कूल के वर्चुअल टूर पर। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज़ वर्ल्ड। होप यूर ऑल फाइन। सो आज मैं आई हूँ ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल के गुड़गांव के ब्रांच में, सेक्टर 41 में सिचुएटेड है। मुझे यहाँ आते ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। आज मैं यहाँ का टूर कराऊंगी आपको, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एकेडमिक्स के साथ, और यहाँ के प्रिंसिपल और एकेडमिक हेड के साथ भी मैं आपका इंट्रैक्शन करवाऊँगी। तो मुझे यहाँ आते ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस जगह पर अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, जहाँ आपका बच्चा बहुत टाइम तक रहने वाला है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने वाला है, उस प्लेस का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और यही पॉजिटिविटी मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये पॉजिटिविटी और ये स्कूल का सारा कल्चर, इन्वायरमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये स्कूल का रिसेप्शन एरिया काफ़ी वेलकमिंग और वाइब्रेंट है। Talking to you. Hello, ma'am. It's my honor that you have given me the opportunity to speak about the Orchids International School. So, if I talk about Orchids, it is one of the branded school in pan-India level, and we believe in holistic development of the child. And we work with the students. We work for the students. अभी हम आए, ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास है, शायद नर्सरी या केजी की क्लास है। और ये बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। ये राइम्स गा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट बोर्ड। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ कि मैं जिस भी क्लास में गई, बच्चों के हैप्पी फेसेस, बच्चों का सेटिस्फाइड होना, खुश होना स्कूल में आकर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ मैं जिस भी क्लास में जा रही हूँ, बच्चे बहुत खुश, सेटिस्फाइड और हैप्पी दिख रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया कि ऑर्किड स्कूल ओनली फीमेल स्टाफ पॉलिसी अपनाता है। कोई भी मेल स्टाफ नहीं होता स्कूल में। इनके सारे ही ब्रांचेस में सिर्फ फीमेल्स ही काम करती हैं। स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ स्विमिंग पूल, बच्चों का प्ले एरिया, फिर यहाँ पर क्रिकेट की नेट्स, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और टाइम टाइम पर इवेंट्स और टूर्नामेंट्स भी स्कूल ऑर्गेनाइज़ करती रहती है। फिर हम गए, बच्चों का गेम्स पीरियड चल रहा था। ये एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल फील्ड है। यहाँ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बहुत खुश और एक्साइटेड लग रहे हैं बच्चे गेम्स खेलते हुए। देन द म्यूज़िक रूम में बच्चे कई सारे अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं। देन द डांस रूम, जहाँ पे बच्चे डांसिंग सीखते हैं। फिर यहाँ का ऑडिटोरियम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे टाइम टाइम पर बच्चे परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर आके परफॉर्म करना सीखते हैं। देन द कंप्यूटर लैब, जो कि वेल इक्विप्ड एंड वेल मेंटेन्ड है।
काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं यहाँ पर। बच्चों ने क्यूट यहाँ पे शॉर्टकट्स की से डेकोरेट किया हुआ है लैब को। देन दी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी बुक्स से वेल मेंटेन्ड है। हर क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। बच्चे यहाँ पर रीड करते हैं और यहाँ पे अलग अलग कॉर्नर्स बने हुए हैं। थिंकिंग कॉर्नर, देन द रीडिंग कॉर्नर, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। देन दे हैव दी साइंस लैब जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ये भी वेल मेंटेन्ड है। देन कम्स द DIY रूम। DIY बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे रूम लगा। यहाँ पे बच्चों ने अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं और ये बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे इनके वर्किंग स्टेशन है, ये यहाँ पे बैठ के बनाते हैं और सीखते हैं, क्रिएटिविटी इनकी इन्हांस होती है। इट्स अ ब्रिलियंट कंसेप्ट। ग्रेड 6 में एंटर करते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं देखते हैं, चलिए आइए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? लवली लवली फेसेस आई कैन सी, ऑल स्माइलिंग। सो व्हिच क्लास इज गोइंग ऑन? English. So what you are learning? Okay, what's that? Wow, I don't know that. Sit down, sit down. Thank you, ma'am. Lovely. क्या है? कौन बताएगा? What is that? Having fun? Yes. What to say? And the advancements made in education is impressive from the time of the 1900s to currently 2023. Wow, that's great. Clap for him. देखा आपने कितने कॉन्फिडेंट है बच्चे बोलने में और इतने खुश लग रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे पढ़ते हुए खुश भी रहें और सीखें भी इतनी सारी चीज़ें, राइट? Yes, मैम। शिप्रा मैम से बात कर रहे थे, इंग्लिश की टीचर हैं, ग्रेड 6 को पढ़ा रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लासरूम में, वाइब्रेंट हैप्पी फेसेस। थैंक यू मैम। थैंक यू। इतने बेहतरीन स्कूल का टूर किया अभी हमने, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। स्कूल के बारे में बेहतर तरीके से बताने के लिए हमारे साथ स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स हैं डॉक्टर कविता नागपाल, जो हमारे को स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगी डिटेल में। सो हेलो मैम, इट्स अ pleasure having you on my channel. Welcome to Joey's World Teacher. To start with, kindly enlighten me about your background and the role you play in the school. So, well, I've been in the field of education for the past 30 years, and I've always loved children. So, bringing them up, grooming them the best way, and providing all the possible things, basically being the second parent. So, that has been my passion, and that has brought me to Orchids. Orchids believes that every child is important, and in the holistic development, that uh, the passion with which we teach is seen in our culture in Orchids. And well, as far as the role is concerned, I am the vice president here, handling the North Zone branches. So my job is to ensure that ACADS is implemented very well, academics is implemented very well in in the Northern Zone, all these children that we have. That's lovely. With over 90 chains, could you walk me through how Orchids has become one of the largest school chain? Well, as we basic policy of our school has been that we want to reach out to maximum children in India, giving an international approach of teaching and grooming them and giving them world of opportunities, which we often say but very seldom do we provide. So we usually in normal schools we inform, or we rather train only the children who are already good at it. But here at our Orchids we wanted more number of children to get better education and better methods of teaching. We wanted to reach out to more people in the country. So with that we started with one school at Hyderabad, then we moved to Bangalore, and then Mumbai, and finally now we've reached 90. So I think it's been a good journey, huge journey.
So, ma'am, I've heard so much about the extracurricular activities offered at Orchids. So, could you elaborate the various types of activities that you provide the students? So basically, if you see the how have you asked me that how did we make 90 schools and all. So our approach has been that every child is different, right? So it is not necessary that everybody will become an engineer, he'll be a master in mathematics, or he'll be excellent in English or whatever, right? Core subjects. Life is much beyond this. For example, today if I have to quote you, you've been a successful influencer, right? It is not just that because of teaching, it is your inherent quality which probably you discovered. I was discussing with you, you mentioned during COVID, right? Which you must have discovered during that time. So we want children to know this talent right when they are in school itself. So for that, how do I do it? I need to give them world of opportunities, loads of opportunities. And because of this, we give an equal importance to extracurricular activities, core scholastic subjects as well. And we try to make it measurable so that the child takes interest, and we know after his grade 5 he can decide what is he good at. Okay, that's wonderful, ma'am. There are several options available, like if you search, if parents are searching for schools. So, why would a parent choose Orchids? One very important, which is important for you, for me, or for anybody, is value for money. So within that school, school fees, we try to give loads of subjects with proper guidance as to where should you reach. So it is measurable. One is that. Second is, we make children love the school. We believe that if the child loves the school, he comes to school, he wants to learn, we've done our bit, we've earned our bit. So the parent should be happy that his child is coming to school. If you feel like that, okay, this is your intention, Orchids is the best place. Because the child, if he is enjoying his schooling, you and I were under strict times when our teachers were very strict. But here, when do you learn? When you have a passion for that subject, right? So for us, child is our subject. So I'm sure the parent would believe that. That's a wonderful thought. Like, if a child is fearless and he is free to express himself or herself, that's the best thing a school is giving. Yes. That's wonderful. Is parental and family involvement is mandatory at Orchids? Yes. We believe that parents should know what the child is doing. If the teacher is putting in the effort, teacher she knows the child, but it is equally important that the parent is also at the same page. So if I am grooming a child in a particular way and a parent grooms the child or teaches the child in a different way, the child gets a little puzzled, which we do not want. So we always have a collaboration with the parent. We believe that if the parents know what their child is doing, they don't need to put in extra effort. We want to bring in comfort to them. For that, communication is very important, and definitely our focus is only the child, both the parent and the teacher. That's really important because parents should also know what's going on in the school. Yes. Parents' involvement is very And they have important. a right to know it. Yes, So yes. Lastly, ma'am, what advice you would like to give to our parents who are watching, who are seeking high quality education for their children? Being from Orchids, I will definitely say Orchids is the best place. Even if I have to invest on a child's education, then I think, as I mentioned, apart from value for money, it is not only money that we need to value, we even value the core, the grooming part of it, making them independent and decision making. All these are very important in life. So parents should think of all these things before choosing a school. All right, ma'am, that's wonderful. It's a wonderful experience talking to you, and Thank you you so so much. much for your time and your invaluable insights you have given to us. And it's a wonderful experience. Thank you so much, Thank ma'am. you so much. So, Thank you, Nazia. मैम से बात करके मुझे तो मतलब मेरा दिल इतना खुश हो गया है, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर पूरे स्कूल में ही, पूरे स्टाफ, स्पेशली कविता मैम के साथ बात करके मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको भी यही फीलिंग आ रही होगी.
जाने से पहले मैंने बात की वहाँ के ऑपरेशंस इंचार्ज से जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देखती हैं स्कूल में। उन्होंने बताया कि किस तरह से बसेस में बच्चों को टीचर्स ही एस्कॉर्ट करती हैं और इस तरह के यहाँ पे नेट्स लगे हुए हैं ताकि कोई बच्चा अगर ऊपर से कुछ फेंकता है तो दूसरे बच्चों को चोट ना लगे। अभी ऑर्किड्स का सारा टूर किया, सारी आपने देखी क्लासरूम्स, इतने सारी एक्टिविटी रूम्स और इतनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ बच्चों के लिए। मुझे तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करके। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं सारी जो डिटेल्स हैं स्कूल की वेबसाइट का लिंक और जो भी डिटेल्स हैं स्कूल की सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो चेक करें, विज़िट करें स्कूल को। जिस भी सिटी में, बहुत अलग अलग सिटीज़ में ये ब्रांचेस हैं, तो आप जिस भी सिटी को बिलोंग करते हैं वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं स्कूल और एक्सपीरियंस करें। इतना अच्छा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट दें, जहाँ पे बच्चे ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सकता है एकेडमिक्स के साथ साथ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।